मेरा नाम है अमरदीप और आप इस वक्त देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकॉल प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जो आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस किसे कहते हैं? डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी। किसी भी मूविंग बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, उस पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होगा उसको हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी कहा गया है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। डायरेक्शन उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मूविंग बॉडी। किसी भी मूविंग बॉडी का इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्योंकि यहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कहा गया है और दोनों का ही एसआई यूनिट मीटर होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का ही एसआई यूनिट मीटर होता है। तो कुछ पॉइंट से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव और कैन बी पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होगा। और एक टॉपिक के बारे में हमने देखा था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कब कहेंगे? जब इक्वल डिस्टेंस इज ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। किसी भी बॉडी के द्वारा इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाएगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उस बॉडी को कह सकते हैं द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। उसी तरीके से जब भी कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम कहेंगे द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उस बॉडी को हम कह सकते हैं द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। सो व्हाट इज स्पीड? We describe the motion of a body as fast as or slow in terms of speed. जी हाँ, मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो बॉडी कितना फास्ट या कितना स्लो चल रहा है। इन टर्म्स ऑफ स्पीड के टर्म में हम मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखते हैं मोशन का स्पीड का डेफिनेशन क्या होगा। स्पीड, द स्पीड ऑफ ए बॉडी of a body is the distance traveled by it per unit time. Yes. So the speed of the body is the distance traveled by it per unit time. So we can write speed is equals to distance traveled by time taken। मतलब किसी भी बॉडी के द्वारा एक यूनिट टाइम में जितने भी यूनिट टाइम के अंदर में वो डिस्टेंस को कवर करता है, डिस्टेंस को कवर करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। सो यहां पे हम लोग अगर एसआई यूनिट का बात करें, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड कैसे आया? इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड इस तरीके से भी
लिख सकते हैं। मीटर पर सेकंड कैसे है, तो डिस्टेंस ट्रैवल का ऐसा यूनिट हम जानते हैं मीटर होता है और टाइम टेकन का सेकंड्स होता है। हेंस स्पीड इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड। हेंस its SI unit is meter per second. So speed is equals to meter per second. So speed is a scalar quantity. Yes, speed is a scalar quantity. Scalar quantity. Speed is a scalar quantity. Why speed is a scalar quantity? Because in speed we only consider about the distance, and as we know distance is a scalar quantity. We only talk about the magnitude of the body. We only talk about the magnitude of the body in a speed. Hence speed is a scalar quantity. तो अब हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड किसे कहते हैं। एवरेज स्पीड समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक बॉडी A to B 60 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है इन 2 आवर्स। A to B a body covers 60 kilometer in 2 hours and next 60 kilometer in 3 hours. अगर हम बोले कि इस बॉडी का एवरेज स्पीड क्या होगा, मतलब पूरा डिस्टेंस को कवर करने में उसने किस स्पीड से उसने पूरा डिस्टेंस को कवर किया, तो इस एवरेज स्पीड के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे एवरेज स्पीड कैन बी रिटन एज द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी is the distance traveled by the body divided by the total time taken. So the average speed of the body is the total distance traveled by the body divided by the total time taken. Yes, so average speed can be written as total distance traveled by total time taken. Total distance traveled by total time taken. ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड। सो इस कंडीशन में अगर हम लोग एवरेज स्पीड निकालना होगा तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 60 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, देन 60 प्लस 60 120 by 3 plus 2 5. Hence 5 2 times में that is 10 and 20 by 4 are. It means 24 kilometer per hour. This will be the average speed of the body. Yes, kilometer per hour, distance is in kilometer and hour is time is in hour. Hence 24 kilometer per hour will be the एवरेज स्पीड। तो ये थी एवरेज स्पीड के बारे में। तो वेलोसिटी हम किसे कहेंगे, हम लोग कब बोल सकते हैं, वेलोसिटी के बारे में हम कैसे जानेंगे? तो यहां पे वेलोसिटी और स्पीड में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। यहां पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज आल्सो द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। यस, एक छोटा सा वर्ड यहां पे ऐड हो रहा है, इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। आइए देखते हैं वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वेलोसिटी में जब भी हम लोग बात करेंगे तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी इन ए पर्टिकुलर फिक्स्ड डायरेक्शन, ए डेफिनेट डायरेक्शन। हेंस वेलोसिटी कैन बी रिटन एज
the velocity of the body, the velocity of the body is the distance traveled, by a body per unit time in a definite direction. Yes. So the velocity of the body is the distance traveled by the body per unit time in a definite direction. जो एक्स्ट्रा है वो है definite डायरेक्शन के बारे में यहां पे बात हो रहा है. अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी is equals to distance traveled in definite direction divided by per unit time. ठीक है. तो अगर हम ध्यान से देखें डिस्टेंस ट्रैवल इन डेफिनेट डायरेक्शन क्या होता है? कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, इट इज ए डिस्प्लेसमेंट. यस. सो वेलोसिटी कैन बी आल्सो रिटन एज displacement by time taken. Yes, velocity can be written as displacement by time taken because displacement is the distance traveled in a definite direction. Displacement is only that distance traveled in a definite direction. Hence, velocity can be also written as displacement by time taken. तो क्योंकि यहां पे जब भी हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है हमारा, डेफिनेट डायरेक्शन आ रहा है हमारा, इसीलिए वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज एसआई यूनिट की बारे में जब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है और टाइम टेकन इज सेकेंड. Hence, the SI unit of velocity is meter per second or meter per second. इस तरीके से हम लोग डिनोट करके लिखते हैं मीटर पर सेकंड के लिए. So, velocity is a vector quantity. अब बात आती है एवरेज वेलोसिटी किसे कहेंगे. तो फिर व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? अगर हम उस एग्जांपल को देखें थोड़ा सा तो इसमें अगर ये बॉडी इन स्ट्रेट लाइन में डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है बट इट्स वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. ए टू सी पोजीशन पे जा रहा है, ये बी पोजीशन है, उसने स्टार्ट किया था 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेकिन उसने एंड किया 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से. तो व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी? द एवरेज वेलोसिटी विल बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ इट्स इनिशियल एंड द फाइनल वेलोसिटी. दिस विल बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी. स्टार्टिंग वेलोसिटी इज 20 किलोमीटर पर आवर, हेंस इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 20 किलोमीटर पर आवर एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बी 40 किलोमीटर पर आवर. Hence, the average velocity will be the arithmetic mean of its initial and the final velocity. तो हम लोग देखते हैं एवरेज वेलोसिटी को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कैसे करेंगे हम एवरेज वेलोसिटी को? when an object moves in a straight path, when an object moves in a
straight path with a variable speed, then the arithmetic mean of initial velocity and the final velocity of the body of the object in the given time. So when an object moves in a straight path with variable speed, then the arithmetic mean of the initial velocity and the final velocity of the object in the given time is the average velocity. So average velocity can be written as initial velocity plus final velocity by 2. So u plus v divided by 2, this is the velocity v. So the average velocity v is equals to u plus v by 2, where u is equals to initial velocity and v is the final velocity. So this is the average velocity. When an object moves in a straight path with a variable speed, then the arithmetic mean of the initial velocity and the final velocity of the object is in the given time is the average velocity. So average velocity is equals to initial plus final divided by 2. वही एग्जांपल्स हम एक बार समझते हैं. A to B है, 120 किलोमीटर डिस्टेंस है टोटल कवर करने के लिए. अब इसने स्टार्टिंग में 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इसने स्टार्ट किया, मतलब u इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर, और उसने एंड करने वक्त उसका वेलोसिटी जो था वो मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर था. तो v इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर. सो एवरेज velocity is equals to u plus v by 2. Hence 20 plus 40 divided by 2, and 40 plus 20 is 60 divided by 2, hence 30 kilometer per hour. This will be the average velocity, 30 kilometer per hour. This will be the average velocity of the body. So ये था, आज हमने पढ़ा स्पीड वेलोसिटी के बारे में, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में. और अब बात करते हैं स्पीडोमीटर के बारे में. स्पीडोमीटर किसे कहते हैं? द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ ए बॉडी. किसी भी बॉडी का स्पीड को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं. एंड व्हाट इज ओडोमीटर? द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड ओडोमीटर. तो ये दो तरह के जो डिवाइसेस हैं जनरली हमारे व्हीकल्स में लगे हुए रहते हैं, जो स्पीड और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. आज की वीडियो में बस इतना ही. होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर किसी भी तरह का आपको सजेशन या फिर क्वेश्चन या फिर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं.